women's rights are not just a women's issue. It's a societal issue. And therefore, it is important for us to join this movement to make sure that we actually advance gender equality and women's rights. And she took my father, who was ill, on her shoulders and crossed the border from Delhi and entered Lahore in the dead of the night. The mind of a child is like a clean slate. उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो पहले 4-5 सालों में होता है. Why would men join a movement that would probably deprive them of the dominant role that they have in society? If we are able to influence behavior change, if we are able to influence the social norms and the culture that exists today, and then we will see a difference down the line. 1961 से लेके 2016 तक तो आपके यहाँ औरत के मुतल्लिक कोई कानून ही नहीं बना और फिर अचानक आप देखते हैं कि इतने कानून बने क्योंकि आपने 20% औरतें असेंबलियों में बिठा दी. Even West में जंग अजीम ना होती, if the World War hadn't happened, the women would have never come out of their homes and would have never worked. I do laundry. Laundry now has become easy. In the older days when laundry was being done by hand. देहात में आज भी 2 लोगों की बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्कूल टीचर और मौलवी. I want my child to grow up knowing that she has the freedom to do whatever she wants and she can fly. अस्सलाम वालेकुम, आपकी होस्ट नबीला मालिक अपना जेंडर टॉक्स का अगला एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं. हमने आपसे जो कुछ सवालात किए थे उसके आपने जवाबात दिए और उसी की रोशनी में हम आज अपना दूसरा पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं. हमारा जो सवाल था वो ये था कि अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे इस मुल्क में तो वो क्या चीज़ होगी जिसको बदलने से जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के गोल्स तक हम पहुंच सकेंगे. तो ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ ने बड़े खुल खुला के और कुछ ने फ़ोन करके हमें कहा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे मुल्क के आदमी हैं. तो हमने आज आदमियों को इकट्ठा किया और एक आपको इनसे बात करते हुए बाकी चीज़ें जैसे बताएंगे, आज आपको ये भी बता दें कि यूएन वुमेन को इस बात का एहसास था और इसी वजह से हमने सितंबर 2014 में ग्लोबल लेवल पे कैंपेन जारी की जिसका नाम है HeForShe. आज हमने मदऊ किया है 3 ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जो हमारी नज़र में सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये टाइटल पाकिस्तान में रहते हुए हमें कन्विंस करके लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल I will like to introduce Franklin Okumu. Franklin is the Deputy Country Representative of UN Women and he's only recently joined us just a couple of months back. But he's already made an impression because in one of our events, he went to the stage and he said to all the Pakistanis, do as I do. I have a little daughters and I get up on the stage and I tell the world, don't you dare mess with my girl. And he said, you need to do the same for your girls. So welcome, Frank. Thank you very much for taking time out. And let me first introduce my other guest and then I'll come to you with my first question. I also have with me Omer Khalid, but he's a well-known celebrity. He is a journalist and a TV anchor. And we have with us Muhammad Younas Khalid Sahab. He's our gender advisor at UN Women. This is our topic of today. And let's move on with our first question. And my first question is to you, Frank. How are you HeForShe? What qualifies you to become a HeForShe? Thank you very much, Nabila, for a very warm introduction. I really appreciate that and the great opportunity to speak about our role as men, as advocates for gender equality and women's rights. That's what HeForShe is all about. HeForShe is a global movement that was set up to ensure that men are actually advocates for gender equality and women's rights. The purpose for
men like myself to discuss he for she, to be champions for he for she, is because women's rights are not just a women's issue. It's a societal issue. And therefore, it is important for us to join this movement to make sure that we actually advance gender equality and women's rights. Absolutely. That is what he and she is. And let's come to our local celebrities and ask them, how did they earn the title? So the same question to you, Khalid साहब. आपको कैसे हम ही फॉर शी कह सकते हैं एक पाकिस्तानी मर्द को? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द जब हम कहते ही हैं तो ज़हन में वो मर्द आता है जो कि कभी हिफाजत की ओर में के बहाने से, कभी किसी बहाने से औरत को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश करता है, उसको आगे बढ़ने के मौके देने की कोशिश नहीं करता। तो जैसे फ्रैंक ने बताया कि ही फॉर शी तो वो है जो कि एक औरत के साथ खड़ा है और उसको आगे चलने में और साथ खड़ा होने तक उसकी मदद करता है। तो आपको कैसे ये टाइटल मिला? आपने ऐसा क्या किया? पहले तो मैं ये कहूँ कि मेरे सामने एक इतनी एम्पावर्ड खातून बैठी हैं, नबीला, तो आपको देख के जो है ना, यू आर जस्ट वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स। हमारे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ख़वातीन काम करती हैं। और भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है नबीला, कम्स फ्रॉम माय फैमिली साइड। एक तो मेरी थोड़ा बैकग्राउंड वेरिड है, आई एम हाफ फ्रेंच हाफ पाकिस्तानी। मेरी वालदा फ्रांसीसी थी और मेरे वालिद साहब पाकिस्तानी, लेकिन दोनों साइड से मैंने हमेशा ख़वातीन को पावर विल्ड करते हुए देखा है, हमेशा ख़वातीन को घर चलाते हुए, हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़त करते हुए और होते हुए देखा है। चाहे वो अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर्स की तरफ जाऊं, मेरी जो दादी थीं इंडिपेंडेंस के वक्त, वो घर में अकेली थी मेरे वालिद साहब के साथ, बिल्कुल छोटे से बच्चे थे और हमले हो रहे थे न्यू दिल्ली में। एंड शी टुक माई फादर हु वॉज इल ऑन हर शोल्डर्स एंड क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम दिल्ली एंड एंटर्ड लाहौर इन द डेड ऑफ द नाइट। मेरी वालदा ने बहुत काम किया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, शी इज़ नो लॉन्गर विद अस, बट उन्होंने यहाँ आके फ्रेंच स्कूल स्टार्ट किया। उन्होंने एक पूरी सोसाइटी अपना चेंज लेकर आई। वो ये नहीं कि उनको पुश किया गया चेंज ने, बिकॉज शी हैज सेल्फ वांटेड टू डू इट। मेरे वालिद साहब ने कभी उनको नहीं कहा कि आप इस तरह से अपने आप को ढालें, आप किसी और रिलीजन में हैं तो आप इस्लाम कबूल करें। उन्होंने सब अपने बलबूते पे किया। फिर उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, उन्होंने यहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट किया, उन्होंने इतना काम किया। और मेरे वालिद साहब ने कभी उनको ये नहीं कहा कि नहीं आप घर से बाहर नहीं निकल सकती या आप ये नहीं कर सकती। मैं मेरी छोटी बहन इज़ अ लॉयर, वर्क्स फॉर एन NGO, डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। शी इज़ अ वेरी एम्पावर्ड वुमन। मैंने नहीं देखा मेरे वालिद साहब ने उसको कहा कि बेटा आप काम नहीं कर सकती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे सामने इतनी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मेरी फुप्पोएँ जो हैं दोनों, वो उनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ना उनके बच्चों में से ना उनके हस्बैंड में। मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसी खवातीन को देखा जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेचर, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। यूनुस साहब आपकी तरफ आती हूँ। उमर साहब वाज लकी। उमर साहब गॉट अ बैकग्राउंड, हिज मदर, एवरीबडी, द वुमेन एम्पावरमेंट इज जो इन्होंने देखा, देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट फॉर हिम। You come from a background, and I just want to make one thing very clear. हमारे रिश्तों में जो तकद्दुस है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराइयां जो हैं सिर्फ उनको निकालना है, सिस्टम्स नहीं। हम एज सच ये नहीं हम कह रहे कि, क्योंकि जब आप जेंडर की बात करते हैं तो आम फहम में लोग ये समझते हैं कि आप चाह रहे हैं कि लड़कियां बस जो है ना रस्से तोड़ा के शायद भाग जाएं। मिसकंसेप्शंस नहीं चाहिए। एक तो आप जो है ये बताइए कि मकसद क्या है हमारा, ये जो हम जेंडर एम्पावरमेंट करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या इक्वालिटी की बात करते हैं। और दूसरा, आप जैसा शख्स जो कि फ्रेंच बैकग्राउंड नहीं है, कीनियन नहीं है, ये कैसे इस लेवल तक आया? इतनी समझ बूझ कहाँ से आई? देखिए, मैं एक देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। नो डाउट मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे थे, सरकारी अफसर भी रहे, लेकिन जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ लड़कियों का पढ़ना और नौकरी करना वो शायद अभी तक भी उस तरह से खुल के सामने नहीं आ सका, कुछ एक हल्के की हद तक। इसके बावजूद कि आधी से ज़्यादा फैमिली जो है वो यूके में सेटल्ड है। तो एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ। और मेरी वालदा जो हैं वो किसी स्कूल से नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैं उन्हें तालीम याफ्ता ही समझता हूँ, क्योंकि 5वीं जमात तक हमें यही नहीं पता चला
کہ وہ جو ہماری غلطیاں نکال رہی ہیں انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ غلطی ٹھیک پکڑتی تھیں ہوم ورک میں یا شام میں پڑھاتے ہوئے. تو if you take this as, so I actually was inspired by my father کہ جب لیٹ 70s میں میرا بھائی پیدا ہوا تو میں بہت چھوٹا سا تھا، تو اسکول جانا شروع کر دیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کوکنگ کر رہے ہیں اور کئی دن تک وہ چھٹی کر کے وہ کوکنگ کر رہے تھے اور کالج نہیں جا رہے تھے جہاں پہ انہیں جا کے پڑھانا تھا. تو ایک تو یہ بہت بچپن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں نقش ہے، پوری طرح یہ بھی نہیں یاد کہ کیا پکا تھا یا کیا نہیں تھا. دوسرا اس کے بعد خیر تعلیم اپنی چلتی رہی. والدہ کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ انہوں نے کلاس 3 4 5 سے ہی میری 2 بڑی بہنیں تو انہوں نے پڑھا بھی اور انہوں نے نوکری بھی کی، اور ہمارے درمیان میں کام بانٹ دیا گیا. مثال کے طور پر میرے ذمہ تھا صبح کے وقت میں جوتے پالش کرنا، سب کے یونیفارم استری کرنا. بڑی بہن جو ہے ان کے ذمہ کچھ اور تھا. تو وہ ایک تربیت کا عمل جو ہے وہ، جس کی مجھے سمجھ بہت بعد میں آئی کہ یہ جینڈر ٹریننگ ہو رہی تھی، نام نہیں پتہ تھا اس وقت کسی چیز کا، لیکن یہ سب گھر کے اندر ہوتا گیا کہ سب کو سب کچھ کرنا ہے. اگر میں بیچ میں انٹرجیکٹ کر لوں جی تھوڑا جی سا. پلیز. یونس، آپ نے بتایا کہ آپ کو اس طرح سے ٹاسک دی جاتی تھی. مجھے اس سے یاد آیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے میرے والد صاحب بھی کہتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ گھر پہ کوئی کام نہیں کرے گا، صرف بچے کام کریں گے. تو میری بہن گھر کبھی ہم ڈیوائڈ کرتے تھے اور پھر یہ چینج ہو جاتا تھا آرڈر. کبھی میں گھر کھانا پکاتا تھا تو میری بہن گھر صاف کر رہی ہوتی، پھر میں گھر صاف کر رہا ہوتا تھا اور وہ کھانا پکا رہی ہوتی تھی، اور وہ کہتے سارا کام بچے کریں گے. تو ہم نے ہر چیز انڈیپینڈنٹلی، جس طرح سے آپ بات کریں اس سے مجھے بھی یہ یاد آیا کہ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں دی یوزڈ ٹو بی اسپینڈ بائی ڈوئنگ چورز ایٹ ورک اینڈ وی نیور تھاٹ کہ یہ ہمارے بلو ہے ہمارے رائٹ یا ہم یہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے یہ ایک ہمارے والد صاحب کی بھی ایک تربیت تھی کہ ہمیں سکھانا کہ بیٹا آپ کسی سے نہ کوئی کمتر ہے نہ کوئی افضل ہے، ایوری بڈی از ایکول. اچھا، اسی سے چلتے ہوئے اگر آگے چلے جائیں تو فاسٹ فارورڈ جسے کہتے ہیں ہم، تو 1995 میں چونکہ میں سرکار میں تھا تو بیجنگ کانفرنس ہوئی. تو پہلی دفعہ جو ایک پوسٹر میری نظر سے گزرا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق بھی انسانی حقوق ہیں. ایک تنظیم نے وہ بنایا تھا یہاں پہ، ویمنز رائٹس آر ہیومن رائٹس. سو فرام دیئر ایک اور تبدیلی کا عمل شروع ہوا کہ ٹھیک ہے عورت بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہے، اور ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ، لیکن وہ ایک انسان بھی ہے. تو کیوں نہیں عورت کو برابر کا ایک انسان بنانے کے لیے کچھ کیا جائے. اینڈ ویئر آئی ایم ٹوڈے، یو آر پریوی یور سیلف، بٹ لیٹ می سے آئی ایم ناٹ ہیئر بائی چانس. بہت سارے لوگ ان کاموں میں اپنی جابز میں چانس ہوتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. I took so many hard decisions to choose this. I could have been somewhere else at a very highest position, but it was my choice to work for women of Pakistan. And Alhamdulillah, I can claim that in last 28 years, the things I have done. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی کہ جب مجھے ایک اسٹیشن سے ٹرانسفر کیا گیا، ایک تنظیم کی میں سربراہی کر رہا تھا جو عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں. تو سب سے زیادہ آنسو جو ہیں میں نے اپنی فیمیل کولیگس کے یہاں دیکھے. انہوں نے کہا جیسے آپ ہمارا خیال رکھتے تھے اگر کوئی خاتون بھی آ گئی تو نہیں کرے گی. ایکسلنٹ. اوکے، that's very well. So one thing we have established that the upbringing plays a very key role. How you turn up is how you see your parents and what are the messages that you receive from them. I'll again start with you. That's not everybody's that lucky. You know, especially in our society, and this is to all of you, not everybody is that lucky. We grew up, we get messages from our televisions, from our schools, from our society at large, that women have a different role. And somehow that's a subservient role. So those who are not lucky enough to have that kind of upbringing, how would you tell, what would you tell them which will convince them that this is the right way to go? And this is a question to all of you. Just, I want quick answers. I want to know exactly what is it that they can do or we can do to turn them. I think you've spoken to it already. We have children. I have a daughter, and I've spoken very openly that I don't like people messing with my baby girl. That's what I've said. I think each one of us has to make sure that we understand that women are just as good as we are.
They're just as good as we are. And if we don't... You know, Frank, when somebody says that we need to understand women are just as good as we are, it hurts me a bit. Why don't you understand that? And what's there to understand? That is the question. What is there to understand? It is just as simple as women. Yes, Younas said... Women's rights are... Women's rights are human rights. I mean, somebody needs to tell you that. That's my question and that offends me. इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा, देखें एक एहसास होता है और उस एहसास को जगाने के लिए जहाँ तालीम है, तरबियत है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन आज के दौर में मीडिया बहुत किरदार अदा करता है उसका। देखिए, द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो पहले 4-5 सालों में होता है। अगर हम कहें ना एडल्ट लर्निंग तो बड़ी बाद की बात आ जाती है, उसमें आदतें बदलना। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ख़ास तौर पर कह दूं, हम खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त हमारी 70% 60% से ऊपर आबादी जो है वो यूथ बल्ज है। तो उनके साथ काम करने के लिए मेरा ख्याल में हमें ये जो आज आप काम कर रही हैं ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था कि रोल मॉडल्स को सामने लेके आना है। देखें, हमारे मुआशरों में लोग ये नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। आई एम अमंग दोज फ्यू 2-3 पीपल जिन्होंने ये औरत के हकूक़ की बात करनी शुरू की, जिस ज़माने में ये लोग कहते हुए शर्माते थे कि हम औरतों के लिए काम करते हैं। हम उस माहौल से निकल के यहाँ तक आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह से औरत की बात करने के लिए, औरत के हक़ की, उसकी बराबरी की और वो प्रोटेक्शन की बात की नहीं यहाँ पे बात हो रही कि जी आप एक हिफाजती हिसार में कोई औरतों को लेना है। वो अपनी हिफाजत खुद करती हैं। और जो आपने बात अभी कही जिसके ऊपर फ्रैंक भी कह रहे थे, देखिए नीड्स दोनों की अलग हैं। व्हेन यू कम टू जेंडर तो नीड्स दोनों की अलग हैं। इक्वालिटी राइट्स की बात हो रही है। एब्सोल्युटली। अब तो बात ये है कि ग्लोबल एक्सपोजर है, दौर बदल गया है, ठीक है। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको देख रही हैं मीडिया में किस तरह से नबीला, बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट थिंग्स आर वेरी फार फ्रॉम द रियलिटी, बहुत सारे ऐसे टीवी ड्रामाज हैं जो ख़वातीन के रोल को बहुत एक निचला एक दिखाते हैं, जैसे शी इज़ नॉट एम्पावर्ड, शी इज़ ऑलवेज सफरिंग। आप हमेशा उसकी बेचारी द स्ट्रॉन्ग मदर इन लॉ जो बहू के ऊपर जुल्म कर रही है, मियाँ बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा है, मियाँ 2 शादियाँ कर रहा है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स। मुझे याद पड़ता है, यू नो, इन दी 80s व्हेन आई वाज अ किड एंड आई यूज्ड टू वॉच ड्रामाज लाइक अनकही, लाइक धूप किनारे, लाइक तन्हाइयाँ। ये ड्रामे तो कभी ख़वातीन को नीचे करके नहीं दिखाते थे। एट दैट टाइम दे टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई स्टिल रिमेंबर कि ख़वातीन की इज्जत, ख़वातीन को इक्वालिटी देना, उनको वही उनके राइट्स देना जिस तरह से मर्दों के हैं हुकूक देना, वो उस वक्त भी कहा जाता था। बीच में क्या हुआ आईड लाइक टू अंडरस्टैंड, बट नाउ अब यही कहते हैं ये यू नो यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। बट द फैक्ट इज डिस्पाइट द यूथ बल्ज आई टोटली एग्री विद हिम। उनको आपको स्टीयर करना है राइट डायरेक्शन में। उसमें ना सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया भी जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, लेट्स पुट इट कोट अनकोट, उसको भी एक सीधी राह पे लेकर आना है ताकि आपकी जो नौजवान नस्ल है वो अपने स्टीरियोटाइप्स से निकल के एक ऐसे यू नो जेंडर बैलेंस को अपनाएं जो कि हम कुछ दहाइयों पहले भी करते थे, यू नो। Tell me one thing. I'm coming to you. I know I'm not being fair to you, Frank, but give me a minute. Why would men join a movement that would probably deprive them of the dominant role that they have in society? I think this is a societal issue, as I mentioned. This is an issue that would benefit the entire globe. Talk about women's participation in the economy. If you have less of women participating into the economy, what does that mean in terms of your GDP? So it is in the interest of men to bring women into the participation of the economy in order for them to benefit. But do you think a common man can understand those dynamics? They are not going to understand. How do we convince them? So we need to work with private corporations. We need to work with the government. And we need to work with schools and the media in this case, to make sure that these are instruments that are going to influence behavior change. If we are able to influence behavior change, if we are able to influence the social norms and the culture that exists today,
and then we will see a difference down the line. Tell me, Younas, you just tell me there is another angle to this whole campaign. It's 10 plus 10, impact 10 plus 10 plus. As an individual, what have you done to push that forward? Have you done it, and how can we push our other countrymen to do the same? There are many things which can be quoted here. For example, using the religious clergy for women's rights. Nobody has thought of it, but we started. And I led the campaign for Hudud laws, for child marriage, how we are working with the Council of Islamic Ideology and other clergy, and then bringing all faiths on one platform. So these are the few things. But more than that is my contribution at the local level. Because I have worked at grassroots levels as well, as you know, for many years, forming the groups of men as women's rights defenders. Frank abhi keh rahe the, he was absolutely correct saying in that the people must know that what is the value of the participation of women in the business of a country. That begins from house, home to house. कि घर से शुरू करते हैं, ऐवान तक जाते हैं. आप इसी मुल्क के शहरी हैं ना, जहाँ 2000 के बाद जो असम्बलियाँ बनी, 1961 से लेके 2016 तक तो आपके यहाँ औरत के मुतल्लिक़ कोई कानून ही नहीं बना. और फिर अचानक आप देखते हैं कि इतने कानून बने क्योंकि आपने 20% औरतें असम्बलियों में बिठा दी थी. मैं समझना चाह रही हूँ कि ये ऐवानों तक पहुँचना और बिजनेसेस में आना और ये सारा कुछ तो बहुत बात की बात है. जब बच्ची पैदा होती है, फिर वो बड़ी होती है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ भाई तुम्हारे भी इंसानी हकूक़, शायद तुम्हारे भी हकूक़ हैं. That message in itself shakes a person from the inside कि क्या मतलब, they were still thinking about it, they were still making up their mind about it. And once you have these negative messages instilled in a young child, whether it's a boy or a girl, it's very hard to change it after that. Yeah, let me just jump in there, because these stereotypes are going to continue to exist in the communities, and children are going to be raised understanding that women are inferior of men. So unless we really spend a lot of time and working with the community leaders to make sure that these are changed, these stereotypes, this negative kind of message is transformed, that you cannot contain your children in your household. They'll go out there and they learn something that you really don't want them to learn. So it becomes our responsibility to speak up as men and as women to make sure that those social norms are actually transformed from the community, to make sure that our children are not exposed to those negative I totally agree social with norms. you on that. And Nabila, I'd like to add to it कि देखें, the whole thing of gender equality और women empowerment, it is a global phenomenon. ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन के rights. Even West में जंग अजीम ना होती, if the World War hadn't happened, the women would have never come out of their homes and would have never worked. It is because there was a dearth of men. मर्दों की कमी थी, उसकी वजह से ख़वातीन को आगे आना पड़ा और उनको नौकरी करनी पड़ी घर चलाने के लिए. उसी वजह से ख़वातीन आगे आई. वुमेन एम्पावरमेंट का होल की सारी मूवमेंट वेस्ट में शुरू हुई. आई एम टॉकिंग ऑफ द वेस्ट एंड दिस जस्ट हैपेंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स. तो ये तो वेस्ट में इतना नया फिनोमेना है. इट्स जस्ट अ न्यू फिनोमेना इवन इन द वेस्ट. सो इफ और आप यहाँ बात करती हैं ना कि एक मेंटालिटी जो है ऐसी है, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट कल्चर जो कि हमें इस किस्म की मेंटालिटी के बच्चियां जो हैं गर्ल्स आर इन्फीरियर. आवर रिलीजन नेवर टोल्ड दैट. यू नो हज़रत खतीजा, you know, she was older than our holy prophet sallallahu alaihi wasallam, and my holy prophet still married her. She was a businesswoman in those times. And you know, the religion leads by example, and I feel this is more of a subcontinent culture जिसकी वजह से यहाँ पे आप जो examples देखते हैं वो ये हैं. I think it's not a religion factor that plays it, it's more of a cultural phenomenon that, and we have to break those taboos in our culture by showing what our religion teaches us. And as Frank said, I think, and Younas साहब, जो रोल है रिलीजियस क्लर्जी का, आपके जो मौलवी का रोल है, जो आपके खुतबा देता है जुम्मे का या कोई और खुतबा देता है, इतना इम्पोर्टेंट रोल है वो. अगर वो एक खुतबे में बात कर ले सिर्फ रिलीजन के थ्रू ख़वातीन के हुकूक की, तो कितना फ़र्क पड़ेगा उन लोगों में. क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आपके मौलवी की बात सुनते हैं, आपके घर वालों की बात नहीं सुनते.
یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. اور دیکھیں ہمارے دیہاتوں میں، کیونکہ ہم ایک دیہاتی معاشرہ ہیں، ابھی بھی اربنائزیشن اس طرح نہیں ہوئی. اور جو ہسٹورک ایگزامپل انہوں نے بڑی اچھی دی ورلڈ وار کے بعد عورتوں کا اکانومی میں آنا اور ضرورت کے تحت. دیکھیں ہم ایک ایسے ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں جو ایوولوشن ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ جہاں اسٹل وی آر لیونگ ان دا ٹرائبل ایرا، وی آر ان دا ایگریکلچر ایرا، وی آر ان انڈسٹریلائزیشن اینڈ اربنائزیشن. تو ہمارے ملک میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہ ایوولوشن ابھی چل رہی ہے، اور ایوری ایرا ہیز اٹس اون اسپیسیفسٹیز، اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. جو ٹرائبل کلچر ہے آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح سے چلتا ہے، اور پھر جو زرعی معاشرے ہیں وہ ان کے بھی حالات آپ جانتی ہیں. پھر انڈسٹریلائزیشن جب ہوتی ہے، اربنائزیشن اور وہ سارے بزنسز، تو ہم اصل میں اس میں بھی ایک ہیں جہاں پہ یہ پورا پولیٹیکل انالیسز یا پولیٹیکل اکانومی انالیسز کرنے کے بعد ہمیں اپنے رستوں کا تعین کرنا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کا ایکیڈیمیا بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ مولوی کی لوگ بات سنتے ہیں، دیہات میں آج بھی دو لوگوں کی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسکول ٹیچر اور مولوی. اور وہیں پہ اگر آپ فوکس کریں، لوگ کر رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں تبدیلیاں بھی آئیں گی. دیکھیں سماجی رویے بننے میں صدیاں لگی ہیں. ہمیں انجمن تاجران کو بھی ساتھ لینا چاہیے، ہمیں لیبر ایسوسیشنز کو بھی لینا چاہیے، ہمیں ٹریڈ یونینز کو بھی لینا ہوگا، سی بی ایس جو ہیں ان کو بھی لینا ہوگا، نرسنگ ایسوسیشن ہے، ٹیچرز ایسوسیشن ہے، پروفیسرز ایسوسیشنز ہیں، کلرکس ایسوسیشن، یہ ساری سول سب کو سوسائٹی ساتھ لے کی. کے چلنا. اگر یہ سارے ساتھ چلیں اور وہاں پہ یہ پیغام اب لے کے اکٹھے آگے چلا جائے تو میرے خیال میں کام خاصی آسان تبدیلی ہونا. آ سکتی. Thank you for that, Younas. Frank, to you, and this is a question to all of you. In your personal life, in your personal relationship, what is it that you do differently from a common man with your daughter or your wife? I will leave the mothers out because normally mothers have a different place in the society. Can you narrate anything that is just specific to Frank and special in your relationship? I think we have very special moments with my family, with my wife and my child. We do a lot of things together. They have every freedom to do whatever they want, because I want my child to grow up knowing that she has the freedom to do whatever she wants, and she can fly. She can do whatever she can go to school and become whoever she is. So Do you cook? I cook. Do you clean? I clean. Do you wash dishes? I do wash dishes all the You time, do and I've washed laundry. for so long. You do laundry. I do laundry. Laundry now has become easy. In the older days when laundry was being done by hands, that was the problem. Now that is an easy thing to do. So your daughter is watching you do all that. So my daughter and my son Are both watch me watching do, and when they watch me do, they feel that it is normal. It's regular for, if their father can do it, they can do it too. Okay, Younas, do you cook? یا آپ کو کھایا آپ نے میرے ہاتھ Yeah, that's different کہ پورے آفس کو ایک کھانا کھلا کھانا دیا. کھلاتا ہوں. Do you cook for your family, your wife and your children? Every Saturday, Sunday is my duty. You're cooking. Do you clean? I clean. Do you wash dishes? Yes. Do you do laundry? Exactly. Even by hand, I you have know been I doing. can check. Yeah, and you can check. You can check, and even I am ahead of all these things. میں نے اپنے بچوں کے لنگوٹ خود سیے بھی ہیں، صاف بھی کیے ہیں، تینوں کے. Okay. And everyone knows because میں اور میری بیوی اکیلے ہوتے تھے، اور شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا. When I married, my wife was appearing in BSc final exams. اس کے بعد میں نے اسے ایم ایس سی بھی کرنے دی اپنی مرضی سے. اس نے ماسٹرز ایجوکیشن بھی کیا، اس نے جاب بھی کی، جب دل کیا چھوڑ دی. سو I have done everything which I want from others right from my home. Okay. I'll have to recheck everything, but if it is true, it's very good. What about you, Omer Saab? دیکھیں نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میری کوئی بچی ہے انفارچونیٹلی، اور آئی ڈونٹ نو اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. بٹ میری بہن تو ہے. ماں کا بالکل ڈفرینٹ رول تھا، بٹ میری بہن کے ساتھ آئی آلویز لسن ٹو ہر. شی وین ایور جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تینوں بہن بھائی، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینی ہوتی ہے تو اس کی بات ہمیشہ سنی جاتی ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ. She's elder or younger? No, she's younger to me. لیکن وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس کی بات کو مد نظر رکھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک طرف ہوتے ہیں، وہ ایک طرف ہوتی ہے، لیکن اینڈ میں وہی بات مانی جاتی ہے
जो उसकी होती है, क्योंकि हम उसको वो रिस्पेक्ट बिकॉज हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हमें पता है कि वो शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग प्लेस, शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी राइट प्लेस एंड शी कम्स थ्रू एक्सपीरियंस. और यस, आप अगर बात करना चाहती हैं, आई क्लीन, आई कुक, बट आई एम एन एक्सट्रीमली बैड कुक. तो मेरे घर वाले कहते हैं बस आप वो सब्जी काट ली, प्लीज कट द वेजिटेबल्स एंड पुट द मीट, कट द मीट, tenderize the meat, but don't do the rest, you know. Doing the laundry and doing the rest is totally easy to me. Even sewing, you know, I've sewn my sometimes kuch cheez, you know, my button comes off or something, my jeans have a little, you know, patch that needs to be sewn, or somebody else, my brother has sometimes, so he takes me, can you please sew that for me, because I'm not good at it. So I do that. Never kabhi mere zehn mein ye nahi aaya ki, oh, you know, this is not a man's work, this is a woman's work, this is a human being's work. I mean, this is where मेरी बेटी तो मुझे बाकायदा कहती है, बाबा हेमिंग कर दें, आपकी हाथ की सफाई बड़ी अच्छी. Okay, I'm impressed, Younas Saab, and nobody can lie that far, so you must be telling the truth. Absolutely. I mean, I'll tell you, in the current environment, we get a lot of help. Of course, you don't do it every day. Yeah. But even if you do get a lot of help, you have to demonstrate to your children that you can do just anything. And I think that's what kids need to see in the community to be able to act upon. But, you know, there is that community that really needs, especially, you know, in the real community that needs to see these things happen. You know, we are talking about this because maybe Nabila met you and you normally do that, and I admire that, and I also go and do it. But does it really happen on the ground? Maybe on the ground things are different. So these are the things that I mentioned that we need to be able to address them, work with the community leaders to make sure that the stereotypes, those stereotypes are really broken. And so it is just a normal day when a young man wakes up and goes to the kitchen to make breakfast. It's no longer like I have to wait for mom or my sister to come and do it. For people to actually be convinced of that argument, tell me, how would you rate yourself? Are you happier than an average man because you are a he for she in your personal life? Do you consider yourself to be a more balanced, in a more balanced relationship, which is making the family happier, and as a result, you a happier man, or no? I think, let me just put it this way. I'm always happy. So the he for she did not make me happy. Okay. So that one I must be positive very clear. guy. I'm a very positive person. This alone did not make me happy. But this satisfies me. It makes me feel that I'm making a very big contribution to the society by just ensuring that my daughter, my sister, my mother, they have the same equal opportunities, equal rights, just as I do. So they are not any less of me, and that is what satisfies me. As Frank has said, देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुशनसीब हूँ कि पूरा सफ़र जो है वो करके, और जो मैंने इस सेक्टर में रहते हुए, डेवलपमेंट सेक्टर में वो किया है, इससे अच्छा मेरा ख्याल है मैं किसी और सेक्टर में होता तो डिलीवर नहीं कर सकता. एक छोटा सा वाक़या आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा. नहीं, मुझे पहले ये इस बात का जवाब दें कि घर में आपका और बीवी का जो रिलेशनशिप है, बिकॉज आप घर के भी काम करते हैं, ज़ाहिर है बाहर काम है, पता है, आप कमा के भी लाते हैं, क्या आपकी रिलेशनशिप एवरेज पाकिस्तानी कपल के रिलेशनशिप से बेहतर है? बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, ये कभी मुझे ऑन एयर कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि मेरी बीवी ने, जब हम हज के लिए गए तो मुझे वापसी पे आके बताया बहुत देर बाद कि मैंने वहाँ ये दुआ मांगी है कि मेरी बेटियों को तुम्हारे जैसा शौहर मिले. That's the biggest compliment you can इससे बड़ी मेरी जिंदगी की कोई कामयाबी और खुशी नहीं है. Omer, with your family and everything, with your brothers and your sister, do you think, because brothers and sisters also have, when it comes to gender, they are the same relationships, there are divisions of labor, and usually but you know they could be similar, but they're also very dissimilar in their own opinions, right, in their own understanding of things and their own personalities. मेरा ख्याल है आपने भी देखा, बहन भाई जो हैं एक फैमिली से होते हैं, लेकिन उनकी जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं हमेशा मुख्तलिफ होते हैं. मुझे ये बताएं कि आपको बाहर जाके ये नहीं कभी फील हुआ कि मेरी बहन सारा वक्त अपनी बदमाशी चला जाती है, बाकी तो किसी के घर ये चलती नहीं? बिल्कुल भी नहीं. मैं तो बहुत सारे ऐसे घरों में देखे, हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं, और मैंने बहुत सारी ऐसी लोगों से बात की है, उनका इंटरव्यू किया, जिसमें जिन्होंने अपनी जो आप बीती बताई, जिसमें ऐसी इश्यूज हैं. लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है
ایوری تھنگ ایوری پرسن اور ہر پرسن کی پرسنالٹی از اے ورک ان پروگرس. آپ جتنا اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں گے اتنا آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کی سراؤنڈنگس بہتر ہوتی جائیں گی. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از واٹ آئی ڈو. آئی کنسیڈر مائی سیلف آلسو اے ورک ان پروگرس. آپ یو آلویز ٹرائی ٹو اسٹرائیو ٹو گیٹ بیٹر, اور آپ بہتر اسی طرح سے ہوں گے جب آپ کی انوائرمنٹ آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, چاہے وہ ریڈیو ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ آپ کے والدین ہو, چاہے وہ آپ ہو نبیلا, جو اس پروگرام کے تھرو ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کنڈکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو خواتین کے ارد گرد. ایبسلیوٹلی, میں تو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. بفور آئی کلوز ٹوڈیز پروگرام, اینی تھنگ, ون سینٹینس دیٹ یو وانٹ ٹو سے ٹو دا ینگ جنریشن. I just want to make a call. More than 60% of Pakistani population is under 30 years old. Yes. About 29% of the Pakistani population is between 15 and 19 years old. The ability for us to engage this kind of generation within this bracket, to speak as HeForShe champions, is very important in changing the dynamics on gender equality. So the earlier we do it, the better we will become. Thank you. Thank you. It's very true کہ ہمیں تبدیلی اپنے گھر سے شروع کرنی ہوتی ہے, اور جب ہم یہ سارے سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ لیں کہ جو کام ہم عورتوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں. میری بیٹی کو, میری بہن کو, ان کو اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے. تو جو آج میں کروں گا وہ کل ان کے سامنے آنا ہے. اگر یہ احساس جنم لے جائے سب کے اندر تو میرے خیال میں بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ. Your 1 minute. ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ, دو لفظ ہیں which I feel are very important in any relationship. چاہے وہ دو, ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان ہو, بہن بھائی کے درمیان ہو, ماں باپ کے درمیان ہو, یا آپ کے بچوں کے ساتھ ہو. آپ اگر ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ان کو ٹرسٹ کریں گے تو ہی یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا. خواتین کے سلسلے میں چاہے وہ آپ کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, یا آپ کی کولیگ ہے, یا آپ کی باس ہے, because I've had female bosses and I've had a very good relationship with them, working relationship. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو ٹرسٹ کریں گے اور وہ آپ کو ٹرسٹ کریں گے, اٹس آلویز اے گیو اینڈ ٹو اینڈ فرو. جب آپ ٹرسٹ کرنا سیکھیں گے اور آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے تو آپ کی بھی رسپیکٹ ہوگی اور آپ کو بھی ٹرسٹ کیا جائے گا. آئی تھنک یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ریلیشن, خاص طور پہ خواتین کے کانٹیکس میں. بہت شکریہ. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یور ٹائم, فرینک اینڈ یونس صاحب اینڈ عمر صاحب. اٹ واز این انٹرسٹنگ ڈسکشن دیٹ وی ہیڈ ٹوڈے. مجھے جو سمجھ آیا ہے, جو کہ جس طرف انسان زندگی میں کس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے, خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے, سکون کی تلاش میں ہوتا ہے. خوشی اور سکون مورچہ لگا کے نہیں ملتا, جنگ سے نہیں ملتا, ایک دوسرے کی عزت کرنے سے ملتا ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے سے ملتا ہے, اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے سے ملتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری ینگ جنریشن, اور آپ کو میں دعوت بھی دیتی ہوں, ہمیں بتائیں اگر آپ کے کوئی تاثرات ہیں اس میں, یا ہمیں آپ ہماری کوئی رہنمائی کر سکیں کہ ہم اس کیمپین کو آگے مزید آگے کیسے بڑھائیں, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. لیکن آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھائیں تاکہ یہ جو ایک بیڑا ہم نے اٹھایا ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں جینڈر ایکوالٹی نہیں آئے گی, جب تک ویمن امپاورمنٹ کے ایشوز پہ ہم کام نہیں کر سکیں گے, شاید ہم صحیح معنوں میں کوئی بھی ترقی کا قدم اٹھا نہیں پائیں گے.